Jaya Jaya Navala Kishore Jaya Gopi Chit Chora Prabhu Jaya Jaya Makhan Chore Jaya Jaya Makhan Chore श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री रामचंद्र भगवान की। उपस्थित Hare Krishna. I welcome all the attendees, all the devotees, especially the senior Vaishnavas or devotees of the International Society of Krishna Consciousness, Iskcon. I also welcome all the attendees who have gathered from all parts of the world through the electronic media like Facebook, YouTube, etc. And in particular, I would like to welcome the hosts who have, with their pure and pious heart, organized this beautiful Katha. The Prajapati family, Sri Mani Lal Prajapati and Babiben Prajapati, Chagan Prajapati, and their whole family, Baldev Bhai, Dharmishta Mataji, and their son Prakash, Pooja, and Riyan. I welcome you all on this Ram Katha second day. I welcome you all and our humble obeisances at your lotus feet. Radhe Shyam. राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नाही निमेश। राम कृष्ण दोनों एक हैं। So Rama and Krishna are both same. There is no difference. Ramji's eyes are serious. Gambhir means serious. And Krishna's eyes are Vishesh, that is different or particular. Of the sages of our Vedic culture has said that Ram and Krishna are non-different, but yet there is one difference, that Ramji's eyes are serious, while Krishna's eyes are naughty. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. सो किसी को भी समझ में आ जाए। So Ramji's character can be understood by anyone. Such is the nature, behavior, and characteristics of Ramji. We see that when Ramji got married and when Sitaji came with the garland, Sitaji is
standing, and the auspicious moment is elapsing. Sita ji is waiting that he will bow down a little and I will put the garland, because Sita ji is 1 feet shorter than Ramji. Up on top of it, he has a crown of 1.5 feet, and Sita ji is waiting, but Ramji is standing straight. सीता जी की सखिया राम जी से कहती हैं कि Sita ji's friends tell Ramji to bow down. Ramji is very, very serious, wise, and silent, and he didn't bow down. But if had it been Krishna in his place and somebody would have offered the garland, then that person will not even have to offer that garland. He will make an effort to put that garland on his neck. So this is the difference between the pastimes of Lord Sri Ram and Lord Sri Krishna. So, Maryada Purushottam Ram pastimes we are discussing here, and we have entered the Aranya Kand. Govind TV has arranged, as we mentioned yesterday, that Ramji and Sita ji and Lakshman ji left the they were leaving the forest and earning and moving to Aranya Kshetra. And we discussed yesterday how he left the Chitrakoot and he will proceed to Aranyakan. While in Chitrakoot he had a pastime where Jayant was punished, and everybody realized that he is Lord, and Ramji thought that this is not an appropriate place for us to live. So he is teaching us by example that when we are getting too much of praise, we should not stay there for longer. We should always remember that it might be possible for us to digest misbehavior, but to digest the praises is really a difficult uphill task. That is why Thakur Bhaktivedanta Thakur says that these are the remnants of a dog. So, Chaitanya Mahaprabhu, who used to perform his pastimes and his magnificence used to shown, and if people used to tell that he is the Lord, then he used to shut his ears and take a dip in the river, because if we get too much of praise and encouragement, can deter our progress in our pure devotional service towards the Lord. So although Lord Sri Ramchandra would not face such an issue, but because he is performing the pastimes as a human, that is why he is practically showing us that wherever there are praises, we should not stay there for long. In our disciplic succession,
there is a sage Madhvendra आज Puri. श्रीनाथ जी में जो श्रीनाथ जी का विग्रह है So in Srinath Ji, the माधवेंद्र deity पुरी के द्वारा प्रकट किया of Srinath Ji was श्रीनाथ manifested जी by भगवान ने माधवेंद्र पुरी को Madhvendra कहा कि Puri. मेरे लिए चंदन Srinath लेकर आओ Ji और वे स्वयं asked चंदन लेने Madhvendra गए Puri बहुत to दूर get यात्रा करते हुए sandalwood paste, and he और went उड़ीसा में for पहुंचे long. He reached तो Orissa, एक गांव में गोपीनाथ जी का मंदिर वहां रुके and there he stayed at the और Gopinath temple. माधवेंद्र पुरी के लिए And भगवान गोपीनाथ ने खीर चुराई for Madhvendra और Puri, एक दिन उनको Gopinath पता चल गया कि Ji हमारे घर में stole एक the संत आया है kheer or the और rice इस pudding, संत के लिए and they भगवान realized 5000 that वर्ष there पहले is तो चुराते थे this लेकिन ये saint भगवान has ने चुराया arrived and 500 वर्ष पहले का बोले अभी भी the चुराते हैं Lord has stolen the लेकिन kheer अपने for धर्म him. के लिए खीर चुराई And this is like माधवेंद्र not पुरी ने even सोचा 5,000 कि पूरे years, गांव को पता but चल जाएगा 500 years और लोग back मेरे पास only. आएंगे And मेरी when कथा Madhvendra Puri सुनने के लिए realized that रातों रात people have realized, and माधवेंद्र पुरी now they will उस come रेमुणा to गांव me को and छोड़कर praise me, जगन्नाथपुरी की ओर overnight he left the place and जो moved to सच्चा Jagannath भक्त Puri. होता है ना A pure devotee of the वो Lord मान प्रतिष्ठा सम्मान से दूर भागता है always tries जो to जो सच्चा भक्त stay होता है away from वो मान और सम्मान the की आशा नहीं limelight रखता or पर praises. एक सिद्धांत भी है And there कि is जो a philosophy व्यक्ति as well. मान A सम्मान से person जितना दूर भागेगा who मान और tries to सम्मान away उतना ही from उनके निकट जाएगा the praises, the और more जिसको मान और सम्मान the की बहुत praises get लालसा है attracted उसको to them. कभी मान सम्मान नहीं And मिलता people है who expect ये सिद्धांत reputation or praises, they will कुल never मिलाकर get it. This is the भगवान philosophy. रामचंद्र So, in totality, चित्रकूट को Lord छोड़कर Ramchandra ji leaves गंधमादन Chitrakoot वन और आगे की ओर प्रस्थान करते and हैं proceeds towards Aranya चित्रकूट की सीमा one. पर एक बहुत On the सुंदर borders of आश्रम Chitrakoot, there अत्रि is a और अनसुया का beautiful है hermitage of राम जी ने सोचा अच्छा Atri मैं एक Rishi बात and ये बताता Anasuya हूँ Mata. And I कि should राम जी को जब चित्रकूट छोड़ना share था one more thing, that चित्रकूट के सभी when ऋषियों Ramji ने was उनसे about to आज्ञा leave लेकर Chitrakoot, he took the permission of सभी all the ऋषियों से sages. प्रणाम करके आज्ञा लेकर He आश्रम bowed में down अपने at the पिताजी lotus feet of से all चला the rishis, and then he और चित्रकूट की सीमा पर started to अत्रि और leave अनसुया का आश्रम Chitrakoot. राम जी ने सोचा And कि जाते जाते he, before he अत्रि और leaves, अनसुया माता he का आशीर्वाद thought लेकर that हम आगे I बढ़े should bow down and take गोविंद blessings from Atri Muni and Anasuya Mata. कहते हैं In Ramcharitmanas, Tulsidas ji writes beautifully, अत्रि के आश्रम प्रभु गए सुनत महामुनि हर्षित भये अत्रि के आश्रम so when प्रभु गए the Lord भगवान went रामचंद्र ने or अत्रि visited ऋषि के आश्रम Atri Muni's hermitage, और महामुनि अत्रि ऋषि को जब ये पता चला कि and when Atri Muni realized that Ramji is about to visit us, अत्रि ऋषि then he was बड़े हर्षित हुए ecstatic, overwhelmed with joy, और अंदर का आनंद and हमारे आत्मा his मन चित्त internal प्रकट होता है happiness manifests externally as well. And how? It is added further by Tulsidas ji. अत्रि ऋषि के गात्र अत्रि ऋषि के रोंगटे खड़े हो गए पुलंकित हो गए अष्ट सात्विक विकार होने लगे Atri Muni was feeling the 8 signs of ecstasy, and अगवानी करने के लिए he अत्रि ऋषि started running to welcome Lord Sri Ram. देखी राम आतुर चली आए So Atur Chali Aaye means कि अत्रि ऋषि बड़े आतुर होकर मेरी ओर आ रहे हैं running towards Lord Sri Ram. And Ramji saw this, अत्रि ऋषि ने दंडवत किया and Atri Muni bowed down at the lotus feet of Lord Sri Ram. And
Atri Muni was embraced by Lord Sri Ram. So here also there is a beautiful principle whenever we meet a devotee of the Lord, if somebody is senior than us, so if they are senior not only in age but in their attitude, nature, etc., then we should bow down at the lotus feet. And the, the younger one bows down, and the elder one doesn't allow us to them to bow down, and he just embraced them. But there is so much hypocrisy that the junior devotees want to embrace the seniors. So, but the philosophy or the principle is that the younger devotees will bow down, uh, and the elder or senior devotee will embrace them, like Chaitanya Mahaprabhu and his associates used to do. And Atri Muni's eyes were filled with tears, and Ramji was crying vehemently too, and they both were drenched with their own tears. दिए मूल फल प्रभु मन भाए। राम जी को अपने आश्रम में अत्रि ऋषि Atri Muni or Rishi took Ramji to his hermitage and he gave him a proper seat. So whenever there is a guest at home, then we should first of all serve them with our speech that we are glad that you're here, we have been waiting for you. Then we should offer them sweet seat or a sitting place, and then we should offer them food, etc. So Atri Muni presented fruits, etc. to Ramji Muni. Atri Muni offered all these fruits, etc. to Lord Sri Ram, and he started veneration of the Lord like this. कृपालु शील कोमलम भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां स्वधामदम् निकामश्याम सुंदरम भवाम बुधातमंदरम प्रफुल्लकंजलोचनम मदादि दोषमोचनम नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम भजामि ते पदाम्बुजम अकामिनाम सुधामदम। हे भक्त वत्सल, हे कृपालु, हे कोमल, benedictor of the devotees, O soft-hearted Lord, I bow down at your lotus feet. You provide your eternal abode to the devotees. You are Sham or cloud colored, and to churn this material world, you are like a Mandrachal mountain. प्रफुल्ल कंजलोचनम, बहुत सुंदर खिले हुए कमल के समान, and you are
like your eyes are like the fresh lotus flower, and all the human frailties can be removed by just by you. He adds further, विक्रमं प्रभो प्रमेय वैभवम् निषङ्गचापसायकं धरं त्रिलोकनायकं दिनेशवंशमण्डनं महेशचापखण्डनं मुनीन्द्र सन्तरञ्जनम् सुरारिवृन्दभञ्जनं सुरारिवृन्दभञ्जनम् प्रलम्ब बाहु विक्रमम। हे प्रभु, आपकी Lord, your hands are long. So the long hands denotes physically also, like his hands are as long as we can reach his thighs, and it is also in terms he has a great courage, or he has affluence. प्रभो प्रमेय वैभवम, आपका वैभव, आपका ऐश्वर्य Your opulence is निशंग चाप सायकम, endless आपके or eternal. धनुष बाण Your bows and arrows are amazing, and you are the Lord of all the three material worlds. Dinesh means sun, and you are the jewel of the Surya Vansh. महादेव के पिनाक नाम के धनुष को And चाप खंडनम आपने तोड़ दिया। you शिव जी के पिनाक को खंडन करने वाले हो आप। have broken the Shiva's Pinak bow, and amongst the greatest of the sages, you are the greatest and provider of the greatest pleasure and ecstasy, and you can destroy the demons. So what happened? Atri Muni was bowing down and performing veneration of Lord Sri Ram, and Atri Muni's wife Anasuya is inside, and Sita ji saw that, that all these men are collected here. So it is not appropriate for me to stand here. So I should go to Anasuya mother. This is what we should understand. There was a time that during the Bhagvatam, the men and women used to sit aloof. But online, you can sit together, but whenever there is a social gathering where there is a huge gathering of men, then women should not sit amongst them, as it is not in line of our principles and philosophy. So you can see here that Atri Muni and Ramji are talking,
And Sita Mata और leaves अत्रि माता them के पास आ चुकी हैं and goes to Anasuya Mata. और अनसुईया ने देखा And कि when सीता Anasuya आई है हमारे पास Mata saw that तो Sita ji अनसुईया is माता के here, हृदय में बड़ा आनंद हो गया। she was feeling ecstatic that Sita ji अनसुईया is माता की here. बड़ी महिमा है। Anasuya अनसुईया Mata माता is के मन में आया glorious. कि सीता आई है She thought तो that Sita ji is मुझे here, सीता को कुछ देना चाहिए। I should बहुत offer सुंदर her something. रामायण में लिखा है It is mentioned in Ramayan. अनसुईया के पद गहि सीता मिली बहोरी सुशील विनीता। अनसुईया के पद गही सीता। सीता जी अनसुईया माता के पास चली गई। Sita ji went to meet Anasuya अत्रि Mata, ऋषि की पत्नी है अनसुईया who is the wife of और Atri Muni. अनसुईया का अर्थ क्या होता है And what आपके is the सामने है। meaning of Anasuya in आपने front बोला of your बहुत बार बोला screen? अनसुईया अनसुईया You अनसुईया। have अब said एग्जैक्ट अनसुईया की Anasuya डेफिनेशन many क्या times, होगी? but what is the definition or meaning of this word Anasuya? You can see शास्त्र on the बोलता है top screen. न गुणान गुणितो हंति स्तोति चान्य गुणानपि न हसेत पर दोषांश्च स अनसुया प्रकीर्तये। स उसे अनसुया So, प्रकीर्त Anasuya जाता है। is the one किसे अनसुईया कहा जाता है? who तो is ऊपर की that? 3 लाइन में आप So देख सकते the हैं। definition is in the एक first three न lines. The first गुणान is गुणितो in the हंति first line, जो Na gunan gunito hanti. That कभी means किसी के गुण में दोष न देखे। a woman who न गुणान गुणितो never हंति sees जो कभी भी any किसी के गुण में खंडन frailties न करे। in जो others' कभी भी किसी में qualities. दोष गुणों में who- दोष न देखे। एक ये पहली लाइन है। So that is the first and foremost स्तोति च quality. अन्य And गुणानपि second, in the second और line, दूसरों के Stoti गुणों की chane स्तुति gunanapi. प्रशंसा करे। That means who always और praises the तीसरा qualities in न others. And हसेत third, पर दोषांश्च और दूसरों के दोष का उपहास न करे। and who never दूसरों के दोष laughs पर हंसे at नहीं। the failure दूसरों के or दोष पर मजाक frailties नहीं or करे। offenses of ये others. 3 वस्तु जिसमें होती So है a person who उसे has all these अनसुईया three कहा qualities जाता है। is called Anasuya. तो जो किसी के गुण में दोष न देखे, जो दूसरों के गुणों की स्तुति करे और जो दूसरों के दोषों का उपहास न करे, न हसेत पर दोषांश स अनसुया प्रकीर्तते, उसे अनसुया कहते हैं। तो So ऐसी this is the definition of Anasuya. माता So सीता Sita ji goes to such Anasuya Mata ji. और अनसुया का जब ये गुण है तो उनके पति भी उन्हीं के गुण के समान है। So when Anasuya ji has these qualities, then her husband is also with similar qualities. माया के जो 3 गुण है, So Atri सत्व, means रजस और 3 तमस, is the 3 modes of material nature, ये तीनों गुणों से that जो is परे हैं, modes of goodness, passion and ignorance. तमोगुण से जो परे So a हैं, person who अर्थात is जो beyond शुद्ध all सत्व में these स्थित है, 3 material modes of nature, who is in Shuddh सो पति भी Sattva, बहुत उच्च स्थिति में है। so her तीनों husband गुणों is से परे शुद्ध सत्व also में स्थित। beyond भगवत the गीता 3 में जैसे material modes कृष्ण of ने कहा, nature, as is त्रैगुणात्मक mentioned वेदा निस्त्रे in गुणा Bhagavad चार Gita by Lord Shri Krishna. निर्दंदो नित्य सत्वस्तो, पति अत्रि है और पत्नी अनसुया, लेश मात्र भी जिसमें ईर्ष्या नहीं है। And so और इसके Atri कारण is स्वयं beyond the भगवान material modes of इनके nature, पुत्र बन गए। and Anasuya, अनसुया देवी की बड़ी who महिमा है has no भक्तों। envy towards anyone. एक That is प्रसिद्ध the विषय है, reason आप जानते हैं, मैं उसका विस्तार न they करूं,
become the parents of लेकिन Lord ब्रह्मा Himself. विष्णु और महेश को अपने घर पर So बेटा बना दिया इसी he, अनसुईया they, माता ने। this Anasuya Mata is so glorious that she और आगे made एक ऐसी कथा है Brahma, कि Vishnu, and अनसुईया Mahesh माता their को एक सखी थी, son. And there is उसका a सती का pastime अपराध that हो गया there was तो his मार्कंडेय her ऋषि ने friend, उनको श्राप दे दिया and कि sh- सुबह she सूर्य was उदय cursed होता by है, Markandeya Rishi सूर्य उदय that होते ही at the तुम time of विधवा हो जाओगे। sunrise you will become widow. और माता अनसुईया को पता चला कि And मेरी when सखी को Mata मार्कंडेय ऋषि ने Anasuya श्राप thought दिया that छोटी सी गलती पर, Markandeya Rishi has cursed तब my friend अनसुईया माता in ने such a manner अपने for such a small पतिव्रता offense, बल से, then अपने on पतिव्रता धर्म से the सूर्य की power गति of को रोक दिया। her सूर्य उदय हुआ ही नहीं। devotion अनसुईया towards ने ब्रह्मा husband, देवी प्रकृति Pativrata कहा Dharma, कि माँ ये आपने she क्या कर forced दिया, the संसार उदय क्यों sun नहीं not to होता। rise. And बोले मेरे सखी के everybody पति ने gathered जो that श्राप लगाया वो दूर करो, now that मैं सूर्य प्रकट कर the दूंगी, whole world is अंततः वो getting श्राप disturbed, दूर करना so पड़ेगा। she said that if that curse is removed और only, कुछ then समय I will do पहले that. चित्रकूट गए थे। And thus it was चित्रकूट performed. में मंदाकिनी नदी So बहती we है। went to Chitrakoot एक बहुत सुंदर कथा है few months back, कि and जहाँ there पर is a क्षत्रिय beautiful ऋषि river आज भी that is आश्रम है Mandakini, चित्रकूट में, and still there is a hermitage there. तो जिस समय वे चित्रकूट में रहते थे तो एक समय ऐसा आया And when they used to stay कि in 100 Chitrakoot, वर्षों there तक was one वहां पर time that बारिश for नहीं हुई, 100 years there वर्षा was नहीं no हुई, drop of rain. 100 वर्ष तक अनावृष्टि वहां पर हुई। और ये दृश्य अत्रि ऋषि नहीं देख And पाए। Atri सो Muni could अत्रि not ऋषि tolerate समाधिस्थ हो this, गए, वो समाधि में चले गए, and he went समाधि into में बैठ गए। trance. और अनसुईया माता अत्रि ऋषि की सेवा कर रही हैं। And Anasuya Mata was serving ये her करते husband करते Atri Muni, 54 and thus 54 वर्ष बीत गए। 54 years passed. और 54 वर्ष के बाद And जब after अत्रि ऋषि की 54 years, समाधि खुली when Atri Muni तो came 50 out of his वर्षों तक trance, जिसने पानी नहीं पिया था, who has अत्रि not ऋषि ने drunk समाधि से for बाहर आकर कहा 50 कि मुझे years पानी for दे water, दीजिए। he said, और I यहाँ पर want some अनावृष्टि, water. 100 वर्षों की And there अनावृष्टि, was पानी का जल का कोई स्कोप नहीं। no, और not a पति को drop of पानी मांगना water. है, And her चाहिए husband is नहीं, asking water लेकिन पति when के there is no पानी का water. प्रभाव आप But देखिए she has कि such a मेरे पति ने power जल मांगा of है for तो devotion towards her 50 के बाद husband that समाधि खुली है। my और husband, who was in इसलिए trance for 54 अनसुईया years माता ने and कहा is asking कि water, यदि मैं and पतिव्रता नारी she हूँ, said that फिर if भी I मैंने have आज तक कृष्ण always स्मरण न किया हो, मैंने followed my दिन से यदि husband मेरे and पति की if सेवा I की have है तो मुझे always गंगा ही loved and प्रकट served होना my है। husband with अनसुईया full माता के devotion, पतिव्रता बल से then माँ गंगा Ganga वहां पर Mat प्रकट हुई, should जो आज भी manifest खड़ी here, हुई है and मंदाकिनी के it नाम से। आज भी अत्रि Ganga ऋषि के आश्रम से गंगा river बहती है। manifested as Mandakini ये वो river, अनसुईया and देवी it है is flowing जो till पूर्ण date. पतिव्रता धर्म So का this पालन is किया है। Anasuya Mata, who is the और epitome of ऐसी the अनसुईया pure माता devotional के घर service towards the Lord देवी सीता Pativrata, और भगवान रामचंद्र पधारे हैं। or the righteousness of a married बहुत woman. सुंदर यहाँ पर कहते हैं, अनसुईया के And पद गई Sita सीता, ji is in मिली such a बहुत place सुशील बिनीता। in association of Anasuya Mata. स्पेशली माता सीता अनसुईया जी के चरणों में बैठी है Especially Anasuya क्योंकि Mata, पुरुषों के कुछ धर्म अलग होते हैं, स्त्रियों के अलग होते हैं। because the स्त्रियों के लिए शिक्षा भी बहुत principles अलग होती है, for women and men are इसलिए different, and माता सीता even स्पेशली अनसुईया जी के their चरणों में बैठी हैं। principles are different. That is why ऋषि पति Sita के ji मन is सुख sitting at अधिकारी। the feet of अनसुईया जी को Anasuya ये Ma, बड़ा आनंद हुआ and कि Anasuya आज Mata was सीता feeling मेरे द्वार ecstatic पर that बड़ी Sita ji संख्या में is आई है। here in my home. यहाँ देख सकते हैं नीचे, You can ऋषि see पत्नी here मन सुख अधिकाई। ऋषि पत्नी Rishi माने अत्रि Patni ऋषि की पत्नी के मन में Manisuk बहुत सुख हो। Adikai. That means तो she इस was सुख really होने के दो happy. कारण, एक And there were सीता two जी को reasons for the देखकर same. सीता जी के साथ First, बैठकर इनको just सुख by होने का association एक of कारण Sita ji, तत्व की first दृष्टि reason से is we सीता जी see कौन from है? the सीता जी
view of element, then Sita ji स्वरूपा भगवान की हला देवी is शक्ति का the स्वरूप है internal potency of और Lord वही Himself, साक्षात आनंद शक्ति है and she इसलिए herself उनके is साथ the बैठकर अनसुईया जी pleasure का आनंद हो potency. रहा है That is why Anasuya ji और is दूसरा feeling कारण the ये pleasure. कि अनसुईया देवी ने And सोचा the other reason कि is ये that सीता जो मेरे Anasuya चरणों में बैठी Mata है is thinking जिसके that पिता this Sita who is महाराज जनक sitting है on my feet, whose father और is जिसके ससुर no other than महाराज दशरथ King है Janak, and whose जिनके पास father-in-law किसी is भी King प्रकार Dashrath, की कमी नहीं है who have all लेकिन the फिर भी material opulence and सारे राज्य affluence, के सुख भोग yet को त्याग कर she अपने has left पति की सेवा के everything. लिए She इस has घोर left वन में भटक everything रही है to serve यह her देखकर husband अनसुईया and देवी is का roaming in मन this बड़ा forest आनंद का एहसास and हुआ is in exile ऋषि पत्नी only to बड़ी serve सुख the Lord. अधिकाई That is the reason उन्होंने Anasuya Ma उनको is बड़ा आनंद हुआ ecstatic, क्योंकि सीता जी ने अपना धर्म निभाया because Sita ji वो is चाहती तो following भरत the जनक के पास चली जाती righteousness सीता चाहती तो वनवास के दौरान of a दशरथ जी के married वहां रह woman. जाती She could have वनवास stayed, राम को she मिला could है have gone to her सीता जी को नहीं मिला father, or she could have stayed at सीता her जी father-in-law's हमेशा home. से राम जी के She साथ was थी not given exile, और only यह Rama was देखकर given exile, ऋषि पत्नी मन सुख but अधिक yet she पाई followed her husband. अनसुईया देवी को And बड़ा seeing this, आनंद हुआ Anasuya Ma is जब इस प्रकार से extremely कोई समर्पण करता है ना happy. भक्तों And if someone तब surrenders संतों की like ओर this, से आशीर्वाद कृपा then निकलती है हम that लोग person संतों is से भी blessed कृपा की by भीख the मांगे sages. कृपा कभी नहीं मिलेगी Even if परंतु we संत go on महात्मा जब देखते हैं asking for कि ये भक्त benediction or सेक्रीफाइस कर boons रहा है from ये भक्त भगवान के लिए कुछ त्याग the रहा है तब the जाकर sages, संतों के but हृदय से when a बिना sage मांगे sees that कृपा this निकलती है devotee is sacrificing सीता जी so के much for the समर्पण को Lord, देखकर दूसरे लाइन then श्रद्धालु भी देखिए automatically the आशीष sage देई निकट बैठाई blesses the devotee. अनसुईया जी ने So if सीता you जी को see आशीर्वाद in the दिया last और निकट line, बैठाई सीता जी दूर the बैठी थी so लेकिन बेटा तुम it नीचे is said that नजदीक बैठो सीता जी she को नजदीक gave बैठाया her blessings and she अच्छा told her कोई to पूछे sit होगा near her. आशीष दे आशीर्वाद क्या दिया So Ashish Dei, आचार्यों ने what was the बहुत व्याख्या benediction लिखी or है इन blessings सब what प्रसंगों she पर gave? So there are quite few अनसुईया interpretations माता by ने sages. आशीर्वाद क्या दिया Anasuya कुशली Mata, राघवो यातु त्वया सह पुनर्गृहम क्या आशीर्वाद दिया so she कुशली blessed राघवो that यातु त्वया सह पुनर्गृहम राघव और तुम दोनों कुशल that रहो you ऐसा नहीं कहा and सदा Raghav तुम कुशल both रहो should क्योंकि पत्नी be यदि कुशल है पति कुशल happy. नहीं है तो सुख नहीं So होगा या पति because ठीक है पत्नी ठीक if नहीं है इसलिए राघव के साथ so she इसलिए says तुम भी that कुशल रहो Raghav and you और both बहुत should be जल्द happy, पुनर्गृहम and अपने घर पर very वापस soon लौटो you should go इस back to प्रकार से your आशीर्वाद home. दिया So और these were the blessings दिव्य Anasuya Ma वसन gave to them. And then भूषण पहिराए जे नित नूतन अमल सुहाए अनसुईया जी ने माता सीता को Anasuya ji वस्त्र दिया gave a beautiful ऐसा वस्त्र cloth जो कभी which पुराना न हो will never ऐसा वस्त्र get old जो कभी मलिन न हो and ऐसा वस्त्र will never get जिसकी dirty, शोभा कभी हीन न हो तीन गुण and वाला वस्त्र इन्होंने whose प्रदान किया shine will never go. So all these three अब वस्त्र कैसे qualities were तीन there गुण in this ऐसा जो cloth पुराना न हो ऐसा जो that मलिन she न हो gave. मैला न हो गंदा न हो बदबू न आए और ऐसा वस्त्र जो शोभाहीन न हो माने जिसकी स्टाइल आजकल होता है ना आज लिया है 2-5 साल के बाद वो स्टाइल वस्त्र तो अच्छा होता है लेकिन वो स्टाइल नहीं चलती है तो ऐसा वस्त्र दिया जिसकी स्टाइल भी पुरानी नहीं होगी मैला भी नहीं होगा पुराना भी नहीं होगा धोना भी नहीं पड़ेगा इसलिए कहते हैं दिव्य बसन दिव्य वस्त्र प्रदान So किए these were the divine clothes which she presented to Sita भूषण ji, पहनाए और and बहुत she सुंदर gave आभूषण माता सीता her को beautiful सीता जी ornaments. ने कहा नहीं हमको तो वनवास मिला है So Sita अनसुईया ji जी ने said कहा that we हाँ are in वनवास exile. राम को मिला है सीता जी Anasuya ji said तुम्हें ये that सब करने की जरूरत
Ramji has been given exile. It is not necessary for you to do that. So she gave her 12 ornaments. किंकणी पहनाई, चूड़ी पहनाई, अंगूठी पहनाई, She gave कंकड़ी पहनाई, bangles, विजायठ पहनाया, हार rings, पहनाया, कंठश्री पहनाया, बेसन, the टीका, necklaces, टीका, शीश फूल, इस प्रकार के 12 and such. आभूषण So, in देवी this को manner, चढ़ाए, she माता gave सीता को 12 पहनाए। ornaments to her. कह ऋषि वधु सरस मृदु बानी, और ये सब प्रदान करके And after giving अनुसुईया जी ने these, सरस और Anasuya मधुर ji, मीठी वाणी में in a कहा, very sweet, नारी melodious voice, धर्म कछु said, ब्याज बखानी। हे सीते, तुम "Oh मेरे पास Sita, आई हो, now यदि that you have तुम्हारे पास come टाइम हो, here, समय हो, if you have some तो क्या time, मैं नारी धर्म की बात करूं? then shall I tell you the principles that सीते, a यदि married तुम्हारे woman पास should समय हो, follow?" तो मैं तुम्हें नारी धर्म की बात करूं। आप श्लोक में देख सकते हैं, पहले You can दूसरी लाइन में, see in this verse नारी the धर्म second line, कछु Nari Dharma ब्याज Kuchu बखानी। Byaj मैं Pakhani. थोड़े नारी धर्म की बात करूं? That shall I tell you about the सीता principles जी ने of कहा कि womanhood? इसका मतलब ये हुआ माते कि मुझे So नारी Sita धर्म ji said, सीखने की बहुत जरूरत है, क्योंकि आपने सीधा she, प्रस्ताव रख दिया। that means नहीं नहीं that नहीं I सीते, need to तुम तो नारी धर्म learn the दिखा ही principles रही of हो, womanhood. So लेकिन Anasuya कछु ji said, ब्याज no, you are बखानी। ब्याज following बखानी माने the principles तुम्हारे of माध्यम womanhood, से but by your medium, कलयुग में अमृत चर्चा में बहुत सारे लोग in, बैठे होंगे। in तुमने Kali पूरे Yuga, so many फरमाओगे, people will be क्योंकि अमृत listening चर्चा वाले to भी through सोचते Amrit हैं कि हमारे Charcha, जीवन में so that they ब्याज can शब्द का listen अर्थ यह है, and they can apply in नारी their धर्म lives in future. कुछ ब्याज बखानी। तो तुम्हारे माध्यम से So सबको ये through your ज्ञान होगा, medium, everybody जैसे will get कृष्ण ने this अर्जुन को knowledge. गीता का ज्ञान दिया, As लेकिन Krishna अर्जुन के gave the माध्यम knowledge से इस of संसार में सबको Gita to नारी धर्म का Arjun, ज्ञान हुआ। but everybody got तो अब जैसे benefited. अनुसुईया जी पूछ रही है, वैसे मैं भी आपको पूछूं, नारी धर्म किछु ब्याज बखानी, समय है आपके पास नारी धर्म के विषय में? So even I माता जी want to हमारे पास ask समय है, you that क्योंकि स्वयं तो whether बोल नहीं सकते, अब मुझसे बुलवाएंगे। खैर, देखिए shall मैं I अब tell you the उतरने जा principles रहा of हूं एक womanhood? समुद्र Now में। I मैं am going प्रायः इस प्रसंग को to see. छोड़ने का ही प्रयास करता हूं, Usually क्योंकि इस I प्रसंग में जो है ना, try to अनसुईया जी ने escape तोड़ or दिया leave है, this topic, बिल्कुल because ऐसा in this उपदेश दिया है कि Anasuya जिसका ji has प्राण ही given खुल जाए। such a नारियों के लिए बहुत सुंदर उपदेश दिया है, और हमारे request शास्त्रों or में भी वर्णन principles of देखिए womanhood. कि नारी धर्म And नारी if you के see रूप in से the दिया है। scriptures, अब the महाप्रभु beauty जी is ने that वहां the श्री lecture राम जी की on चर्चा चल रही womanhood है, और घर के अंदर आप फोटो में is भी देख सकते being हैं discussed or कि told एकांत by में women herself. अनुसुईया जी सीता जी को बता रही है। अब एक नारी अनसुईया दूसरी So नारी सीता को Anasuya नारी ji, धर्म का उपदेश दे रही है। मैं बीच में a आकर woman, बैठा हूँ, is giving इसलिए मुझे the प्रसंग को जिस बात lecture से or जोड़ा, session on ऐसी the ऐसी principles बातें of womanhood जो मेरा to अधिकार Sita है ji, who वही is a बोलता woman. हूँ, So, और and कभी here घर में कुछ I, पंगा हो जाएगा a man who तो बहुत is लोग telling all विरक्त हो this, and जाएंगे, भाई ये ऐसा many क्यों बोल women रहा है, will, तो मैं many पहले people इसलिए will क्लियर leave. कर दूं, मैं So let उपदेश me दे रहा हूं, clarify that I am not श्लोक saying आपके सामने anything. होंगे। The ये verses will बात be in front एक of you. पतिव्रता नारी This is जगत the जननी माता सीता को बता रही है, principles that संसार की नारियों के लिए। a married women, the epitome अब आप कहोगे नारियों of के लिए, पुरुष के लिए principles तो of था ना, womanhood कल हमने बताया ना, is sharing. राम जी ने सीता जी के बालों So, में बेणी डाली, वैसे so पुरुष को for चाहिए if you कि अपनी ask for पत्नी की women, सेवा करे, then एकांत में बेणी डाले, yesterday we एक discussed पत्नी को how आइसक्रीम खिलाए, दो a शेर शायरी बोले, एक husband दो should गाना गाए, इसमें कोई पाप नहीं please है। his wife ये सब and पुरुष का sometimes धर्म है। serve them. These are the पुरुष का धर्म है principles of कि एक that स्त्री a man अपने should follow. अपने माँ बाप That को छोड़कर, अपने he परिवार should को, understand साथी that a संबंधियों को woman छोड़कर who ससुराल में has आई है, left everybody in her और family ससुराल में आई to हुई स्त्री के come बड़े अरमान होते हैं। and be with पति her को husband and चाहिए his family, कि then अपनी पत्नी को she पूरी also तरह has से प्रसन्न some रखे, संतुष्ट expectations. करे। So the husband should महाप्रभु always ने बड़े try to आचरण से ही make चरितार्थ किया है, his wife बहुत happy, दूर and अभ्यास किया
This is shown by Lord Sri Ram, and we discussed yesterday. लेकिन आज But today नारी धर्म शुरू हो रहा है. we are going to discuss the principles of womanhood, अनसुया जी कह रही हैं कि सुनाऊं, or the righteous तो मैं भी principles आपको for बताऊं, सुनाऊं, married women. सुने, So even I am asking, shall we अच्छा लगेगा ना? discuss? ठीक है. हालांकि यहाँ पर सब हमारी माताएं हैं और आप सब नारी धर्म का पालन कर ही रहे हैं, And you जैसे all सीता जी कर here रही are हैं. following लेकिन फिर भी the अनसुया जी सुना रही है principles कि of और womanhood, दृढ़ हो जाए, so that, और हम but इसमें still perfect Anasuya हो जाए. Mataji is sharing so आइए that अनसुया we माता become जी more की perfect. So let's महावाणी की listen शिक्षा प्रारंभ the हो रही है. principles of womanhood through the mouth of Anasuya Ma herself. तू पिता भ्राता हितकारी मीत प्रद सब सुनो राजकुमारी अमित दानी भरता भय देहि अधम सोनारी जो सेवन ते. हे सीते, Oh, Sita माता पिता ji. भ्राता हितकारी. So, सीते किसी भी स्त्री के लिए father, mother, and माँ, brother बाप, भाई ये सब हित करने वाले होते हैं. are all who think of किसी our भी स्त्री welfare. का For हित any women, उनकी माँ करती है, उनका पिता करता है, welfare is उनका thought भाई करता about है. by her लेकिन mother, याद रखना father, सीते and brother. But कि always माँ, remember बाप, भाई that ये जितने भी लोग हैं all ये these किसी भी स्त्री का relatives, हित कर सकते हैं, they can give, लेकिन ये think हित of her करेंगे welfare, मित प्रद. but मित प्रद how माने much can लिमिटेशन they में, help? बहुत कम But समय it will तक, be in बहुत limitation कम or हित कर for पाएंगे. some time only हित तो करेंगे, माँ, बाप, and very पिता, भाई, limited. बंधु किसी भी स्त्री का हित सोचेंगे, हित करेंगे, लेकिन सर्टन लेवल तक, ज्यादा हित नहीं कर सकते. They करना भी होगा cannot तो भी नहीं कर सकते. do माता, more than that. पिता, भ्राता, And even if they और want, they cannot जितने भी हैं cross. स्त्री के रिलेटिव, वो पूर्ण रूप से उस So they स्त्री cannot का fully हित नहीं कर सकते. सो मातु do पिता welfare भ्राता of that हितकारी woman. मित प्रद सब सुनु राजकुमारी. मीत, मीत माने So myth here means लिमिटेशन में. limitation, ये सारा जो हित है बहुत लिमिटेशन में होगा. और उसका विपरीत है अमित. and the मीत opposite माने is कम, amit. लिमिटेशन, और So अमित माने पूर्ण amit रूप से. means completely. तो एक स्त्री का हित माता, पिता, भ्राता आदि बहुत लिमिटेशन में कर सकते हैं, So लेकिन the अमित relatives दानी, of a woman लेकिन can अमित माने पूर्ण give रूप से limited एक्सट्रीम welfare, लेवल का हित but केवल एक ही व्यक्ति कर endless सकता है उस welfare स्त्री के लिए. of a और वो woman कौन है? can be done कहते only अमित by one दानी person. भरता बई देही. भरतार, भरता माने स्वामी, Bhartar भरता माने means पति. the husband. किसी भी स्त्री के लिए एक पति ही अमित माने माने एक्सट्रीम सुख, विशेष सुख, पूर्ण He सुख, can पूर्ण only हित give प्रदान कर complete सकता है. happiness and can only think of और her इसलिए welfare completely. यदि कोई So नारी ऐसे if a पति की woman सेवा न करे जो doesn't कि serve such a husband उसे वैसा सुख दे सकता है जो उनकी माता ने नहीं दिया, who पिता ने नहीं can दिया, give भाई ने such नहीं दिया, the pleasure परिवार that वालों तो प्रश्न ही nobody नहीं else है. can give लेकिन जो her, सुख इन सब ने मिलकर नहीं दिया, वो सुख उनका पति दे सकता है. और 30 पर भी and यदि कोई पत्नी even अपने then, पति की if सेवा a न करे, wife तो doesn't वो serve her अधम husband, मानी जाती है. then she is अधम considered माने as नारी adham, जिससे that is अन्यथा. demonic. वह नारी अधम है जो सभी ओर से हित करने वाले अपने पति की सेवा नहीं करती हैं.
शिव पुराण का एक श्लोक मेरे पास आया है तो मैं निवेदन करूं। There is one verse from Shiv Puran, the top शिव पुराण में लिखा है, verse in front of your अब नीचे screen. रामायण चल रही है, ऊपर So कोड in the लिखा below हुआ है it's शिव पुराण, Ramayan, शिव पुराण and the में top भी there is a बहुत Shiv सुंदर Puran गृहस्थियों के लिए verse. बात बताई है। There is beautiful description कहते of मीतम ददाति the जनको, मीत rules and principles for householders. मीत माने लिमिटेशन, So here also तो this word is मीतम used. Myth means लिमिटेशन limited. में ददाति दे सकते हैं जनक, जनक माने They जन्म can देने वाले पिता, give किसी भी स्त्री को the father. मीतम So ददाति any जनको, जनक जो है बहुत लिमिटेशन women में दे सकते हैं। can get मीतम in भ्राता, limitation from her भाई या father, बहन को हित या सुख या and आनंद दे even सकता a है, लेकिन brother मीतम can give बहुत लिमिटेशन में। pleasure also in some नहीं दे सकते limitation. ऐसा नहीं है, It's not that they cannot give, लेकिन मीतम बहुत लिमिटेशन। but it is limited. सो मीतम ददाति जनको, मीतम भ्राता, किसी स्त्री के लिए उनका भाई भी सुख दे सकता है, लेकिन मीतम लिमिटेशन में। मीतम सुत, अरे बेटा भी किसी भी स्त्री को उनका And सगा even उतना सुख नहीं दे सकता, the son cannot give that much पुत्र भी जो pleasure, सुख देगा वो भी लिमिटेशन। because that also will be limited. शिव पुराण कहता है But तीसरी लाइन, Shiv Puran says, the अमितस्य third line, दातारम, Amitasya hi dataram, that means पूर्ण रूप से complete pleasure जो or हित कर welfare सकता है और सुख दे can सकता है, be वो एक done ही व्यक्ति only है, by भरता Dataram or Bhartaram, that is माने the पति ही husband. पूर्ण सुख दे सकता है। It means the husband only can give the complete इसलिए happiness. उस पति की सदा पूजा करनी So चाहिए। that is why he should always be venerated. बार-बार कह रहा हूं कि ये So I am कहानी telling again and again माता सीता that जी this को is सुना रही है। Anasuya Mata telling Sita ji. हमको कोई पूजाने का मन नहीं है, I don't want कोई स्त्री करे ना or मुझे have no अच्छा लगता है, desire to क्योंकि सीधा मेरे ऊपर आक्रमण हो venerate. सकता है। Otherwise, everybody will attack कौन me. स्त्रियों के विषय में बोलने वाले, तुम Who स्त्रियों are की you to फीलिंग say जानते भी हो भाई, मैं about कुछ the नहीं women? जानता, मैं No, केवल I अनुसुईया know माता nothing, का मैसेज but आपको I'm कन्वे कर just रहा हूँ। conveying the और message श्लोक of के द्वारा, Anasuya इसमें Mata अपना कुछ through the नहीं है, medium of ये सारे verses, शास्त्र की which बातें जो is मुझे यहाँ दिखाई दे taken रही है। from the Shastras or the Vedic injunctions. तीस पर भी स्त्री दावा कर सकते हैं, मैं अमेरिकाની So, સ્ત્રીઓ એટલે ये तो तरत आ तो टीवी माथी बाहर निकले ने तो મને तो इधर से बाहर निकल जाएगी, ऐसा क्यों बोलते हैं आप? तो तीस पर भी कोई स्त्री the, कहेगी कि भाई भाई ऐसा if तो a woman कैसे says अपनी that महिमा आप बताते हो, it's पति की such a पूजा glory पति of की सेवा, husband that a आखिर पति husband क्या should be देता है, served and venerated, क्या but दिया है पति ने? what does a husband एक gives? पति अपनी पत्नी को अपना तारुण्य देता है, So अपनी जवानी देता है, he पति अपनी gives पत्नी को अपना तेज her, देता है, his पति wife, अपना गोत्र देता है, his पति gotra, अपना स्वातंत्र्य दे देता है। his शादी के पहले कितना freedom, स्वतंत्र होता है, शादी के बाद मरता and है, ये even प्रजा भी his नहीं कुछ youth. कर सके, बेचारा अपना स्वातंत्र्य दे देता है। पति अपनी पत्नी को सारी संपत्ति दे देता है, And he gives बेचारा all his पैसे wealth. कमा कमा के गधा बन गया, He जैसे ही शादी works करता है like तो an उसे अपनी ass सारी संपत्ति पत्नी के नाम की हो जाती है। to earn the wealth, and the day he gets तो married, अपना everything तारुण्य, तेज, becomes automatically the wealth स्वातंत्र्य, of संपत्ति, his ये wife. सब कुछ पति अपनी पत्नी को देता है। So a husband gives इतना ही नहीं, all अपने these सब things to कर्मों his का wife. आधा फल He बिना also मेहनत gives किए हुए पत्नी को दे the देता है। fruit of his good deeds. कोई पति ऐसे पकड़ कर रखना चाहे फिर भी पकड़ नहीं पाएगा, Even if he पति wants to 24 get घंटा hold लगा of रहेगा, his उसका good आधा deeds, फल पत्नी को the वैसे ही benefit मिलेगा। of these good deeds, he cannot. He has it is automatically halved and given पत्नी to का the पति wife. क्या करता है? So पति जो what है husband अपनी does, पत्नी का आधा पाप ले लेता है। he takes half of the sins ये of his शास्त्र का wife. सिद्धांत है। This is the principle of यदि the किसी स्त्री Vedas से or पाप हुआ है, Shastras. So if तो a वो woman पाप का आधा पाप पति को देता has है, क्योंकि पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया। वो does अर्धांगिनी any अपने आधा offense, पाप then नहीं भोगतेगी, half of आधा that पाप जो है पति को भुगतना पड़ेगा। offense will
be dealt with her husband. So और बिना मेहनत किए पत्नी को अपना आधा पुण्य प्रदान कर देता है और फिर इतनी सारी चीजें प्रदान करता है। इसलिए अनसुया माता कहती हैं, so and that is why Anasuya Mata says that अपनी पत्नी को जितना आनंद देता है उतना a कोई नहीं दे सकता। husband can give the pleasure and can think of welfare of a woman like no one else. And here Sita ji is referred as Vaidehi. Vaidehi means Videhi's इनके पिता का नाम है विदेह, जनक। daughter. So her जनक की कन्या होने के कारण father's name is Videh, और अवधी भाषा and that is why she is called Vaidehi. तो वैदेही शब्द देकर And in Avdi it is called Vaidehi. So she could have been called Sita ji here, लेकिन वैदेही कहकर but here she's referred as Vaidehi. Anasuya ji is stressing that परवाह किए बिना without पति की इतनी सेवा करनी चाहिए, thinking about your own body, you should serve the husband like that. इसलिए वैदेही संबोधन। That is why she is referred to as Vaidehi here. बहुत सुंदर बात करती हैं। And further, she tells beautifully, धर्मा मित्र अरुणारी धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपतकाल परखी अहिचारी। हे सीते, O Sita, वस्तु की परीक्षा four things are tested when there is a time of distress or when there is an obstacle. आपत्ति का समय आता है तब इसकी So परीक्षा at the time of distress, these four things are tested. What are these? Dheeraj. वो रोज नहीं, लेकिन जब आपत्ति का समय आए Dheeraj is patience. So at the time of distress, the patience is tested. Dharam, then righteousness. Mitra, that is friend. And lastly, Nari or the wife. All these are tested at the time of distress. और चारों की परीक्षा अलग-अलग होती है। And all these four are tested in different manner. Here, परखी शब्द जो है ना, Parakhihi denotes means to test. देखिए सभी को परखने का मापदंड अलग-अलग होता है। So there are different measures to test all these four. So for example, if we have to test gold, then we have to put it in fire. आदमी को परखने के लिए अग्नि में But डालने की जरूरत नहीं, तब तो ढेर if we put a person in fire, then he will be in. So there are different measures or processes to test others. To test a pot, you have to knock it. ठीक उसी प्रकार सबकी Similarly, सबकी परीक्षा all होती है। have their own tests and किसके लिए predicaments, कौन सी परीक्षा है and और किसकी for परीक्षा whom कब होती who है। शास्त्र के एक श्लोक में बहुत सुंदर बात बताई। is tested how and when बहुत सुंदर is mentioned from the Niti Shlok कहते हैं आप in the top screen. जानी याद, ये जो हम कहते हैं ना, ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरा मित्र है, मित्र है। So when we say that this is our friend, so कब होती है? when is a friend tested? At the time of emergency or extreme difficulty. यदि सच्चा मित्र होगा, If it is a best friend, then he will stand in front at the time of emergency.
युद्धे शूरम, और शूरवीर की परीक्षा And a brave heart or courageous person is tested during the मित्र की परीक्षा time युद्ध में of होती है, war शत्रु or की battle. परीक्षा युद्ध में होती है। धने शुचिम, धनी व्यक्ति की परीक्षा And a दान wealthy करने पर होती है। person is tested when he करोड़ों performs रुपए है लेकिन charity. दान न करे If तो you वो have धनी का है crores नहीं। of rupees वो जो but you पोस्ट don't ऑफिस do का नौकरी है, charity, उसका एक then सिक्योरिटी what गार्ड is the पोस्ट use? कहते हैं ना, 10-5 हजार If की you नौकरी don't करने do वाला charity, then पोस्ट नौकर है, you are just वो a एक धनी security guard आदमी of हो that जाएगा। money. You'll just stay धनी there आदमी की and परीक्षा उनका you will दान die. करने The पर होती wealth है। will remain as it is. और फिर आगे कहते हैं, अब And जिस further, पॉइंट पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तीसरे the पॉइंट point where भार्या, what we are discussing, भार्या पत्नी Bharya, की that is परीक्षा wife. कब होती है? A wife कब is सुना? tested when? Have you ever thought पति about की it? परीक्षा कब होती है? कहते हैं भार्या क्षीणेषु वित्तेषु, वित्त धन जब क्षीण हो जाए, When पैसे जब you कम हो are जाए, in loss तब of पत्नी की परीक्षा affluence or होती है। wealth, at that time a माने wife घर is पर कोई tested. सामान न हो और बहुत सारे अतिथि आ जाए, If you have और फिर not much in your home and उस you have कम सामान में so भी many अतिथि की सेवा पूजन guests, आदि कर लेना, and even at this time, सो if a भार्या woman manages, पत्नी that की is her परीक्षा responsibility and that is a principle. और फिर That आगे is the कहते हैं testament व्यसनेषु च of a बांधव, wife. हमारे बंधु बांधव जो समाज है, And उसकी परीक्षा our कब होती है? brothers व्यसनेषु, and family are व्यसनेषु माने बीमार tested पड़ने पर, at the time when we जब get हम sick. बीमार पड़ते हैं तब When हमारे we get संबंधियों की sick, परीक्षा होती है then all कि our कौन relatives are हमारा tested, सच्चा संबंधी that है। who is our real इस प्रकार relative. देवी So in this तुलसी माता manner, सीता को कहती हैं Anasuya Mata कि is धीरे telling धर्म Sita धर्म ji, अरु नारी आपत्काल परचियो चारी। all these are पत्नी की tested परीक्षा तब होती है जब in the पति time of विपत्ति में extreme distress or और difficulty. देवी सीता तो इन सारी परीक्षाओं में खरी उतरी है भक्तों। And Sita ji has passed all अगर these इनके विषय में सीता जी के लिए कहा testaments. जाए It is, तो if we have to रावण say जैसे प्रतिहारी about को खद्योत कहकर the patience of चला Sita देना, ji, then आगे कथा में हम सुनेंगे। we सीता will जी की going to परीक्षा listen about धर्म, हनुमान Sita जी की ji's परीक्षा patience when she was इतना kidnapped by स्वीकार Ravana, नहीं किया, and ये she सीता जी का didn't अटूट accept it और to अचल come धर्म है। with Hanumanji because इस she बात को was देखिए, on the path of एक righteousness विचार or मुझे विचार dharma. आया है। रावण सीता जी का हरण करके चला गया So Ravan और abducted रावण ने Sita सीता जी ji को अपने बंधन में रखा, and bounded her. तो सीता जी रावण को क्या श्राप नहीं दे सकती थी? She could have easily हम cursed लोग देखते Ravana. हैं कि पार्वती माता ने We चित्रकेतु see राजा that को श्राप दिया और उस श्राप से Parvati ji चित्रकेतु cursed असुर हो Chitraketu गया। and Chitraketu became a जब demon. शिव पत्नी पार्वती में श्राप When देने की ताकत है, तो the भगवान wife of शंकर Lord को Shiva has the श्राप potency देने की ताकत नहीं होगी? to curse, अवश्य होगी। then cannot जब Mother पार्वती श्राप Sita दे सकती हैं, curse? तो सीता जी क्यों श्राप नहीं दे सकती? अवश्य दे सकती हैं। She can definitely do that. और सीता जी ने सोचा भी और वो श्राप And देना भी चाहती थी और Sita देने वाली ji भी थी, thought लेकिन and she wanted to सीता जी को curse, मित्रता but टकरा गई। there मित्र की was परीक्षा, the क्योंकि friendship that रावण came ने between, उस because अशोक वाटिका में in सीता that की एक Ashok मित्र थी, सीता Vatika, की एक सखी थी Sita ji had a और friend, उस सखी के कारण and सीता ने due to रावण her को श्राप friendship, देकर नहीं she मारा, didn't curse तो सीता जी ने अपनी Ravana, मित्रता भी निभाई and so she followed और धीरज धर्म her अरुण friendship. नारी आपत्काल परच्यो, और आपत्काल में अपने पति को And न छोड़ा। during the यही time सीता of की उस परीक्षा का exile, she never left her husband महाभारत alone. में श्री वेदव्यास मुनि लिखते हैं, In आप देख Mahabharat, सकते हैं, Vedvyas Muni न च writes, भार्या समम you can see in the कैश्चित् top screen, विद्यते भीषजाम मतम औषधम सर्व दुखेषु सत्यम एतत् ब्रवीमि मैं। महाभारत में लिखा है, in Mahabharat, Vedvyas ji जीवन में writes, कितनी भी चिंता हो, in कितनी the भी life प्रॉब्लम हो, there might इन be many सारी obstacles or चिंता और distress, प्रॉब्लम का समाधान पत्नी
के पास होता है, But all this can be भार्या solved के पास by होता है। the wife. इसलिए महाभारत जैसे ग्रंथ में कहा गया कि भार्या समम न किंचित, That is why it is said समान और there is no one औषधि है, पत्नी के समान than न तो wife. और कोई औषधि There है, न can कोई be no solution है। remedy, medicine, बड़ी or बड़ी प्रॉब्लम का solution. सॉल्यूशन पत्नी के She पास can और resolve राम जी जब so युद्ध many जा रहे थे, problems. अकेले जा When रहे थे, Ramji was युद्ध में about कोई to प्रॉब्लम न go हो जाए, तकलीफ to न हो जाए, exile, इसलिए he देवी was सीता going राम जी alone. के साथ But चली so हैं। that he और doesn't यही सीता face के any भाग्य की difficulty, बड़ी परीक्षा that थी, is why Sita ji जिसमें accompanied सीता him. जी खरी उतरी है। And Sita ji has सुंदर कहते हैं कि हे सीते, tested सीते well. यदि किसी का पति And बुद्ध, further, Anasuya ji adds that यदि if किसी का somebody's पति husband, बुद्ध हो, Buddha बुद्धू हो, means या रोगी not हो, intelligent, या रोगी हो, or if he is या diseased, फिर जड़ हो, यदि किसी का or पति धनहीन हो, अंधा हो, बहरा if he हो, is क्रोधी poor, हो, deaf, या dumb, दीनहीन or गरीब हो, angry, or फिर भी poor, ऐसे yet पति कर कहीं अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। ऐसे पति का भी अपमान यदि कोई even such a husband, तो मरने if के बाद सीता mistreated or ill-treated, then she definitely goes दुखों को to the lower planets, that is Narkloka, and she suffers so much losses. So, when sometimes women say that my husband is unintelligent, etc. So Anasuya ji has given the whole list that even such a husband should not be mistreated by the wife, else she will go to Nark and suffers miserably there. That is why the conclusion is स्त्रियों के लिए एक ही धर्म है, there is only one righteousness or principle for women, and what is that? समझ में आ रहा है ना? स्त्री के लिए एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है, और वो है कार्य वचन मन पति पद प्रेमा। And that is that by our work, our speech, and our heart, we should present love to our husband. कई बार स्त्रियां पूछती हैं मुझे क्या करना चाहिए, So this is the principle for women. So this is what you should do. You should serve the law, your husband. You should respect them. That is the primary responsibility of a wife. रामायण में कहते हैं, Valmiki Rishi also writes in Ramayana. नीचे मानस के वचन है, ऊपर वाल्मीकि जी कहते हैं, स्त्रीणाम आर्य स्वभावाणाम परम देवम पति ही। आर्य स्वभाव की स्त्रियों के लिए That the परम देवता women of कोई नहीं, उनका पति ही। Aryavrat, then for them, the husband ये आर्य is की स्त्रियों के लिए कह रहे हैं, अमेरिका के लिए नहीं कह रहे, equivalent to मत कीजिए। आप लिखे demigods. आर्य, आर्य माने आर्यवर्ष, आर्यवर्त, भारत। So Aryavrat means India or Bharat. आर्यवर्ष Doesn't apply to women in US. के परमम देव, So don't worry. पति को ही परम देवता मानती है। So महानिर्वाण तंत्र में a woman लिखा है, always consider her husband as the demigod. भर्ता पति एव माने It is also mentioned that डाउट मत कीजिए, there is no doubt भर्ता that a husband योषिताम तीर्थ, पति ही पत्नी के लिए सबसे बड़ा तीर्थ है। is the भर्ता highest, तपो, भर्ता एवं सबके pious पति ही पत्नी place, के लिए सबसे बड़ा तप है, पति ही पत्नी के लिए सबसे and बड़ा दान है, he is the पति ही पत्नी के biggest लिए सबसे बड़ा व्रत है, austerity, और पति ही charity, पत्नी के लिए सबसे बड़ा and गुरु है। fasting, and he is the greatest योषिताम
spiritual master for a woman. गुरु तस्मात् therefore Therefore, नारी नारी को चाहिए कि that पूर्ण women रूप से पति should सेवा completely चरे, serve पूर्ण her रूप से husband. पत्नी की सेवा का आचरण करे, अपने पति की सेवा करे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, I am not saying this. This is what Mata Anasuya is telling Sita ji. कितना So, जीवन में उतारना है ये हमें सोचना whatever you want to apply in your life, लेकिन बात you बहुत can decide गहरी on your है end. भक्तों। शिव पुराण में एक चक्कर मारूं, So, in Shiv Puran, it is mentioned. लिखा है, आप कहते हो जब ऐसी स्त्रियों की बात आती तो सारे ग्रंथ आप खोल देते हो, सारे ग्रंथों से निकालते हो। तो शिव पुराण में लिखा है कि भरता देवो गुरुर भरता धर्म तीर्थ व्रतानि च तस्मात् सर्व परित्यज्य पतिम एकम समर्चयेत। व्यास मुनि लिखते हैं भरता देवो, So, it is mentioned in Shiv Puran that husband is the Dev Guru or spiritual master. He is the righteousness, even the pious place. So everything is husband. So you should only venerate your husband. ये समझ में नहीं आता, कुछ लोग भगवान की सेवा तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं, So I don't understand that सेवा अच्छे से क्यों नहीं कर पाते? people serve the Lord very beautifully, but why don't they serve धार में पहुंचे हैं, अभी आगे और टेम्पर बढ़ने वाला the, है, थोड़ा प्रिपेयर कर रहा हूं आपको, लेकिन the मुझे समझ में husband? नहीं आता So कि we have just reached the halfway. भगवान की सेवा So, तो ठाकुर जी की सेवा तो बहुत अच्छे से so करते we हैं, do very beautiful Thakurji's seva or service, but when the Lord Himself is saying, Lord Shri Krishna says, I will quote from Bhagvatam what Bhagvatam says on this. माता अनसुया भागवत जी में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने So Lord Shri Krishna Himself tells in Bhagavatam ये देख लीजिए, the responsibility of husband. That when Krishna becomes happy, and this is what he is telling the gopis. भगवान श्री कृष्ण गोपियों से कहते हैं कि हे प्रिय गोपियां, He tells, oh beloved gopis, भर्तु सुषुण्णं स्त्रीणां परो धर्मो हि मायया। स्त्रीणाम स्त्रियों के लिए that कृष्ण ने तो बहुत for women. स्त्रीणाम स्त्रियों के लिए परो धर्म, परम धर्म क्या है? He says the greatest righteousness बात कर रही थी, is what for a woman. ने तो बहुत आगे की बात कर दी, Krishna has धर्म नहीं, said स्त्रियों के the लिए greatest परम is धर्म क्या है? that what is the highest कृष्ण के वचन pitch of righteousness for women. These are the words of Lord Shri Krishna in Bhagavatam. परम धर्म क्या है? तो कहते हैं अमायया, And he says, शब्द आगे पीछे हो रहे हैं, आप देख लेना, कहते हैं अमायया, Amayaya means without any conceit, दंभ छोड़कर without any envy or pride, परो धर्म अमायया, अभिमान और कपट दंभ आदि छोड़कर भर्तुर सुश्रुणम, भर्तु माने पति की शुश्रूषु, they should सेवा करना, serve their husband. That is the prime responsibility or righteousness for a woman. भगवान कृष्ण गोपियों को कहते हैं। This is what he says to gopis श्री कृष्ण जी कहते in the 10th canto, 28th chapter. श्लोक में ही देखो, स्त्री नाम So स्त्रियों का परो you can see in this verse yourself. तो ही अमायया, माया त्याग कर, कपट त्याग कर, भर्तुर सुश्रूषुणम, अपने स्वामी अपने पति की सेवा करना, और केवल अपने पति की सेवा ही नहीं, And just
serving the husband, but also his relatives. Bandhu means his relatives, that is, their parents, brothers, sisters, etc. They all should be served and they should look after their children. This is the prime responsibility of a woman. The kids are roaming here and there. Husband is just eating bread. In-laws are suffering. And the wife is just chanting. So that by this, not even the Lord gets satisfied. Krishna's happiness or satisfaction can be achieved by this. Further, Lord Shri Krishna adds, if anybody's husband is dushil, that is bad in nature or misbehaves, so although he may be without any fortune or how much old he might be, or he could be inert or a fool or sick, even if he is poor, then also the women should never leave her husband in any situation. स्त्री को चाहिए कि किसी भी प्रकार के पति का साथ न छोड़े, चाहे उसमें कितनी भी गलती क्यों न हो. आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, Further, Lord Shri Krishna adds, अशस्यम च फल्गु कृच्छम भयावहम जुगुप्सितम च सर्वत्र योपपत्यम कुलस्त्रिय. यदि कोई स्त्री अपने if पति a woman समझकर, मूर्ख समझकर, thinks that her husband is poor, weak, unintelligent, etc., can never achieve Swarg, she will always get defamed, and she doesn't know that for a temporary happiness or to avoid temporary unhappiness, she is taking such a huge decision and she is going to suffer for thousands of years. And far greater sin is उससे भी बड़ा पाप है जुगुप्सितम च सर्वत्र ही उपपत्यम कुलस्त्रिय. किसी कुलवान पत्नी के लिए, for a woman from a good family, संबंध रखना ये तो if सबसे she बेकार कार्य है. gets attracted to some person who is not her husband, that is the worst thing, and they have to suffer in the lower celestial planets and suffer for their sins. So if gopis tell Krishna that we have left our husbands and came to you because we want to love you, and Krishna is telling them to go back to their husband, and they say that we want to love you, that is why we came here. So what does Lord Shri Krishna tell specifically? What does Lord Krishna replies? You cannot achieve my love by
physically present with me. केवल अपने शरीर को मेरे साथ रखने से, मेरे पास बैठने से, मेरे उठने बैठने से Just प्रेम नहीं by होगा। sitting near to me अपना शरीर will अपने घर समाज not will. जहां पर तुम्हारा कमिटमेंट है वहां पर दो। So you should शरीर से पति की fulfill सेवा your करो, बुजुर्गों की commitments. You सेवा should करो, बच्चों का serve ध्यान रखो। your husband, लोगों को your भगवान से family, प्रेम and करना your है, kids, etc. कृष्ण ने ये And नियम कहा। they say, पहले the उनसे gopis say प्रेम that करना है we तो want श्रवण to करो, love मेरी you. कथा सुनो, Then दर्शनात्, Krishna says that मेरा you दर्शन should करो, listen to ध्यानात्, अपने my हृदय में बैठ pastimes, मेरा ध्यान कर लो, remember me मयि or भाव see me अनुकीर्तनात्, भाव से मेरा and कीर्तन करो। do sankirtana or chanting. गोपियों, अपने O घर में gopis, रहकर you मेरी should कथा stay in सुनने your से, home. मेरे अर्च विग्रह का दर्शन करने से, You मेरा ध्यान can करने से, मेरा listen कीर्तन करने to से my pastimes प्रेम or बढ़ता है, chant my उतना प्रेम names. मेरे बाजू में बैठने से नहीं बढ़ता है। The तो result बात क्या is है far भैया? more सीखना क्या better है than sitting near to कि me. शरीर से So हम what is the संसार art में that we हैं have to learn और here? संसार That के सारे we कर्तव्य might be रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा fulfilling करें all of our और material रोज responsibilities, कृष्ण कथा का श्रवण but at the करें, same time, चिंतन we इस should प्रकार be से हो। internally always memorizing the Lord. एक बार क्या हुआ, So once, पद्म पुराण में what क्या है, happened? एक आंटो मारू, पद्म पुराण में एक So चक्कर लगाते हैं। in Padma Puran, it is नरोत्तम नाम mentioned के ब्राह्मण ने there was a स्वामी Brahmana भगवान named श्री कृष्ण Narottam, को पूछा, and he asked Lord Sri Krishna himself that, "O पतिव्रता किसे Lord, कहते हैं? who is हमने सुना है कि किसी Pativrata?" भी स्त्री को पतिव्रता धर्म निभाना चाहिए, We have पतिव्रता का heard that पालन a करना woman चाहिए। should follow the principles तो of womanhood, that पतिव्रता is किसे कहते Pativrata. हैं, कृपया करके So what is Pativrata? तब Please भगवान श्री share with कृष्ण me. And हरे Lord Sri कृष्ण Krishna कहते हैं, replies, so these are the पतिव्रता words of Lord Shri किसे Krishna. कहते हैं? थोड़ा सा इसका श्रवण कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, So he says, हरे कृष्णा कृष्ण बच गए आप। सो भगवान कहते हैं पुत्रात शत गुणम स्नेह, बहुत सुंदर बात है। कृष्ण जो बात करते हो तो अद्भुत ही होती है, और शायद मैं आपको कहता हूं कि आप पहली whatever Lord Krishna says, this is amazing. ये And पद्म पुराण के I श्लोक think हैं। this would be the first time you might be hearing this. ब्राह्मण को This कहते is हैं, the कृष्ण verse कहते from हैं, Padma Puran. पतिव्रता नारी किसे कहते हैं? And the question is, एक who नारी के is मन में a मूड हो जाता है एक Pativrata? वचन के बाद कि नहीं भाई, That is the, पतिव्रता what नारी is ही the क्या है? principle of तो फिर उसका righteousness for a स्टैंडर्ड क्या है, woman? मतलब Then उसका what is the नियम क्या है? standard? If we जो want पतिव्रता to नारी का नियम है, understand that, then the principle is पुत्रात शत गुणम स्नेहात। एक स्त्री अपने पुत्र a से woman जितना प्रेम करती है, बहुत प्रेम करती है ना, loves इसमें कोई her प्रश्न ही नहीं son. है। Undoubtedly, अपने there is no पुत्र question से, about अपने it. संतानों से एक माँ का जितना प्रेम होता है, An attachment एक of a स्त्री mother का अपने to पुत्र this से जितना son, स्नेह होता है, उससे पुत्रात शत गुणम, उससे 100 गुना ज्यादा प्रेम अपने पति में 100 times more she should love her husband. शत गुणम स्नेहात। एक, अपने पुत्र से भी 100 गुना अधिक प्रेम पति में हो। दूसरा, राजान Second, भयादथ, जैसे राजा से प्रजा डरती है, as राजा से जैसे प्रजा भयभीत रहती है और राजा को रिस्पेक्ट करती है, as the citizens उसी are प्रकार afraid से or scared of the king, पतिव्रता नारी similarly, पति से जैसे प्रजा राजा से डरती है, a wife वैसे is पत्नी scared देखिए of एक her छोटा सा husband. डर होना There चाहिए अपने should पति be का। तो क्या लिखा है, a
fear of their husband. फिर आराधयेत पतिम शौरी, भगवान कृष्ण अपना नाम ले रहे हैं। So शौरी Lord कृष्ण Krishna का नाम है। is saying his own name. Shauri is Krishna's name. And who is a Pativrata? अपने पति की सेवा पूजा करे, कैसे Who शौरी, serves her जैसे husband भगवान कृष्ण की सेवा की जाती as if she is serving Lord himself. सा पतिव्रता। जिस स्त्री में ये देखा जाता है, And if we see such qualities in a woman, then she is considered 3 पॉइंट यहाँ पर हो गए। righteousness पुत्र से 100 गुना or अधिक, Pativrata. राजा की तरह थोड़ा सा भय हो, और भगवान कृष्ण की आराधना जैसे होती है वैसी आराधना अपने पति को, वो पतिव्रता है। रुको, अभी एक ही श्लोक हुआ, ऐसे 5 है। कार्य So दास, there are 5 more verses here. कार्य करने में, घर का काम करने में So while दासी working बन जाए। in the home, किसी को she समझ should नहीं आएगा work घर के as a काम करने में servant or बहुत फर्क maid. है। Nobody should ये कृष्ण know का the श्लोक difference है, whether she is भगवत the गीता में। maid or the कार्य दासी, lady of the घर का home काम or करने house. में दासी की तरह काम करे। रतो वेश्या और भोजने जननी समा, And और she should भोजन करने serve में, the भोजन food कराने में as माँ a की mother तरह feeds भाव रखे। अपने her. पति को भोजन कराने में So she should feed her husband like a mother. जैसे माँ अपने बेटे का पेट देखती है और पत्नी पाकिट देखती है, तो पाकिट न देखे, बेचारे का पेट देखे, ये सूख गया है, बिल्कुल बारीक सा हो गया है, इसको थोड़ा सा खिलाए, अच्छा पकाकर भोजन करके। तो कार्य दासी और भोजन जननी समा, भोजन करने में माता की तरह होना चाहिए। विपत्सु मंत्रिणीम भरतु, And at the time of difficulty, विपत्ति में हो तो मंत्री then का काम करे। she should advise like a able minister. राजा का कोई मंत्री होता है, As a king has a minister सच्ची मंत्रणा देता है, who gives a great advice. Similarly, when a husband is trapped in a difficult situation, then she should advise. Such women is Pativrata or self-righteous women. भर्तुर राज्ञाम न Further, he adds, मन वचो काय कर्म भी, अपने मन से, अपने so वचन से, she अपने should, कर्म से, by her भर्तु action, अपने speech, पति की and आज्ञा heart, का कभी भी उल्लंघन always ना करे। fulfill the desires of her husband पति की and आज्ञा his का कभी उल्लंघन ना request. करे, और भूंगते पतो सदा चाहती, और पति के भोजन करने के बाद ही स्वयं भोजन And करे। she should साच eat भार्या only पतिव्रता। after her husband has finished eating. Such women is considered as पति की Pativrata, बात को इनकार न करे और पति who के भोजन के always बाद agrees करे। to her husband. यस्याम यस्याम तू शय्याम, ये तो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। जहां Further, he is saying, पति सोते हैं, wherever a husband sleeps, तत्र तत्र च भर्तुर चाम चरंती नित्यशः। जहां जहां पति सोते हैं या so बैठ, wherever the husband उस स्थान sleeps को or पूजा sits, करती है, that उसे place should be पतिव्रता माना venerated. जाता है। Such women તમે is પૂજા ન called કરો, ઓસાથી Pativrata. રીતે તમે વ્યવસ્થિત કરી નાખો તોય પતિવ્રતા જ છો। Even if you don't venerate, यहाँ तो but at ऐसा least कहते हैं, you make the bed कहते properly, हैं कि पति जहाँ or सोता है उसकी then अगरबत्ती आरती लेके that पूजा is करनी चाहिए। also जहाँ जहाँ सोया है sufficient. वो न करो, वो बेचारा जहाँ सोया है उसकी चद्दर वो सब थोड़ा सा ठीक कर दो, पिलो बराबर रख दो, तो भी कलयुग की प्रतिवता मानी जाएगी। खैर, तो यहाँ तो पूजा की बात हो रही है। आगे कहते हैं, नैव मत्सर Further, he adds, न कार्य कर्ण्य न मानिनी, जो कभी भी मत्सरताम, अपने पति से ईर्ष्या, who is never jealous of her जो husband, कभी भी अपने पति के प्रति लोभ न करे, who is not और greedy माने अमाने towards her समहित्वम। husband. पति कभी मान देता है, सम्मान देता है, Mm, और a कभी husband मान नहीं sometimes देता है,
respects or disrespects. सम्मान और अमान दोनों में So समन्वय respect or समान जो है disrespect, या पश्येत she स should पतिव्रता remain constant. उसे So such a पतिव्रता woman कहते is considered as हैं। pativrata. सो इस प्रकार से स्वयं भगवान श्री कृष्ण This is how Krishna himself उस ब्राह्मण को ये निवेदन करते हैं telling the कि Brahmana किस in प्रकार Padma से Puran. पतिव्रता नारी की डेफिनेशन है। लेकिन अब माता अनसुया Now, प्रतिव्रता Mata नारी की Anasuya कैटेगरी बता रही है। gives the categories of the जग प्रतिव्रता principled चार women विधि अहि। or Pativrata Nari. पतिव्रता नारी चार टाइप की होती है। So कृष्ण she ने says that डेफिनेशन दे दी there are पतिव्रता 4 किसे कहते हैं। types अब of पतिव्रता नारी चार टाइप की चार Pativrata कैटेगरी women में होती है। सो जग पतिव्रता चार or the विधि principled अहि। women. वेद पुराण संत सब कहाई। और ये वेदों में लिखा है, And पुराणों में it is लिखा है mentioned और in संतों में लिखा है। Vedas and सबका समन्वय has been said भगवान श्री by the कृष्ण sages ने कर itself. रही है। And Ansuya ji is फर्स्ट telling क्लास की all this. पतिव्रता कौन है? मैं So तो the सेकंड first क्लास ही हूँ। class is खामखा प्रवचन कर first. रहा हूँ, लेकिन करने के लिए कर देता हूँ। हाँ। तो फर्स्ट क्लास की पतिव्रता कौन है? So the देखिए first class श्रीला जी, Pativrata wife उत्तम is के अस बस मन माही, उत्तम पतिव्रता नारी। उत्तम पत्नी so कौन the है? best सपन women में हूँ आन or पति wife जग is माही। one. उत्तम पत्नी वो है जो स्वप्न में भी Who not even in her किसी dreams को पुरुष के रूप में नहीं thinks देखती। of other उत्तम as पत्नी her वो है जो उसको husband, पूरी दुनिया में एक ही पुरुष दिखाई देता है who और वही sees उनका पति है। only her husband बाकी as किसी को a पुरुष male. मानती ही नहीं है, Others are केवल not even पति को ही considered पुरुष as मानती है। आपको male. ये ऐसा भाव किसी का होता है। मीराबाई जब वृंदावन में गई So when we have an और example of Mirabai when she हमारे आचार्य went to से मिलना Vrindavan चाहती थी, and she wanted to तो meet वहीं से मिल Acharya, लेते थे। a great sage, लेकिन आचार्यों के उस and शिष्यों ने कहा कि हमारे गुरु his disciple said that our स्त्रियों से guru नहीं मिलते हैं। doesn't meet women. तो मीराबाई ने मन में अफसोस So करते हुए कहा कि मैं तो Mirabai मारवाड़ से said आई that थी गुरु I बनने के came लिए, from Marwar और यहाँ to आके get आप कहते to हैं make a bona fide कि spiritual आपके master. गुरु किसी स्त्री से नहीं मिलते। मतलब आपके And गुरु here you पुरुष हैं say और वो किसी स्त्री से नहीं मिलते। that he doesn't तो meet मीराबाई women, ने नहीं so कहा that means कि मैंने he is a कहा था, man. सुना था So कि इस I have दुनिया में heard एक ही that पुरुष है there is और only वो है one कृष्ण, male, ये and दूसरा that is पुरुष Lord कहाँ से Krishna पैदा हो himself. गया? So who is this second तेरे male? गिरिधर गोपाल दूसरों ने कोई, उसने तो कृष्ण को पुरुष पति माना था। तो उत्तम नारी She की has डेफिनेशन considered ये है। Govind और as उत्तम her पत्नी husband. नारी नहीं, So उत्तम पत्नी this वो is है the best जो wife स्वप्न में भी पर पुरुष को who नहीं। तो कुछ doesn't बोलते हैं even dreams चलो of जागृत anyone में पर पुरुष को नहीं in देखती, her स्वप्न में थोड़ी अपना कंट्रोल होता है। other. So, होता है but we can say मन that की जो इच्छा our होती है dreams वो cannot स्वप्न be में खड़ी controlled. कराती है। Our कभी ना कभी heart's कहीं ना कहीं मन desires की इच्छा होगी तभी come तो स्वप्न in होगा। our dreams. तो उत्तम पत्नी वो है So the जो best स्वप्न woman में भी is अपने who पति को छोड़कर not only किसी को thinks पुरुष of मानती ही नहीं है। anybody else apart from her दूसरा husband. नंबर The ये है second मध्यम category is मध्यम। सेकंड क्लास की पत्नी वो है कि पर पुरुष को देखती तो है, she अन्य might पुरुषों के see सामने देखती तो है, other लेकिन males, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, लेकिन but अपने से समान she उम्र वाला जो है consider उसे अपना them भाई as मानती है, अपने से brother, बड़े उम्र वाले को अपना पिता मानती है, elder और as अपने से जो छोटे fatherly हैं figure, उसे अपना and who are पुत्र younger मानती है। as their मतलब son उम्र के अनुसार इस प्रकार according to से the वो age. तारतम्य रखती है। अच्छा, तीसरे नंबर की, ये तो सेकंड क्लास हो गया। थर्ड So, क्लास, तीसरे नंबर की so पत्नी कौन the है? third class सेकंड लाइन में or category धर्म of wife is बचाही in the second line. समुजी कुल रहही सो निष्कट त्रिय श्रुति अस कहही। धर्म का विचार करके Who वेद thinks शास्त्रों में इस about प्रकार से the कहा गया है कि हमें dharma or गलत self-righteousness, कार्य नहीं करना चाहिए, that पर पुरुष we की should दृष्टि नहीं not डालनी चाहिए। सो वेदों की look मर्यादा, धर्म की in मर्यादा में रहकर other अपने आप को males, जो रोक लेती है so who stops वो herself थर्ड क्लास की
following the Vedic injunction is considered as the third category of wife. जो वेद धर्म की मर्यादा को। अच्छा, चौथे क्लास की पत्नी, And the fourth category is बिनु अवसर भय ते रह जोई, जाने हूँ अधम नारी जग सोई। चौथा प्रकार वो है, the fourth is उनके मन में पर पुरुष से मिलना है, बातें करनी she है, has संबंध desire to करना है, meet लेकिन or अवसर attach नहीं मिल with रहा है, other और अवसर males, नहीं but मिलने she is के not कारण getting an बात बन opportunity, नहीं रही है, and because of that, ये चौथे प्रकार की। she is तो the यहाँ fourth तक category. पतिव्रता का वर्णन हुआ। So अब these are चलते the हैं। 4 types तो of चलो ये 4 pativrata. क्लास में भी यदि आ जाए तो अच्छी बात है, परंतु So यदि कोई पति प्रतिकूल, यदि कोई स्त्री if a woman, पति वंचक पर पति रति करई, अपने पति को धोखा देकर if a woman cheats her husband रति करती है, and tries to enjoy with other person, then she will go to the roar of Nark for millions and billions of lifetimes. पर पुरुष के साथ अपना संबंध रखती है। बहुत सुंदर गोस्वामी जी अपनी ओर से कहते हैं, Goswami ji adds, सुख के लिए जन्म for a moment of pleasure, for that 7 crores of lifetimes she will be suffering. So she is so foolish that for a momentary pleasure she is risking to go to the lower celestial planets, Narklokas, for 7 crores lives. A woman can go easily to the eternal abode of the Lord if she follows the principles of womanhood. But for a momentary pleasure, she leaves the principle of womanhood and then she suffers for crores lifetime or years in Nark Loka. And what happens? She suffers in roar of Nark. So in roar of Nark, there is too much of anxiety that had we not did or do this, and who always women who always opposes her husband, and what happens? This is what Ansuya Devi tells. पति प्रतिकूल, पति से यदि प्रतिकूल रहे तो जन्म जहां जाई, इस जन्म में तो बेचारा पति सहन कर लेगा कि भाई आप तो प्रतिकूल रहो, so the husband will tolerate, but after the death, उसका जहां जन्म होगा, wherever he is born, पाई तरुणाई, दूसरे जन्म में वो she will become widow in her youth. जवानी में विधवा होना ये बहुत बड़ा कष्ट माना जाता है, And it is considered a great distress. Parashar Muni, the father of Vedvyas, Rishi, tells in Parashar Samhita, को तो कोट किया नहीं, आज आपने उंडाण में से निकाला, मतलब हम स्त्रियों के लिए ही ये जॉब किया ना आपने। खैर ये प्रवाह में आया इसलिए मैं दे रहा हूँ। न व्रत, पराशर ऋषि क्या कहते हैं पराशर संहिता? Parashar Rishi says in Parashar Samhita, न एव न व्रते न उपवासेश्च, हाँ न व्रते, no austerity or fasting, धर्मेण विविधेन च नारी स्वर्गम आपनोति, righteousness, that is Dharmen. ये कौन बोल रहा है? वेद व्यास का बाप बोल रहा है। So this is quoted from the father of Vedvyas, that is Parashar Muni. And what does he say? He says there is no need to fast or perform austerity for women.
to maintain the body, you should do it. न Otherwise, it is not necessary. उपवास करने की जरूरत है, न धर्मेण किसी भी प्रकार का धर्म She फॉलो should. करने की She is जरूरत है। not even expected to fulfill any self-righteousness or dharma, but still she can achieve the upper planet, celestial planet, that is Svargloka, by just only doing one thing, that is फना हो जाएंगे, पति की पूजा नहीं just, just venerating the husband. इजी जो इजी काम है So, we will not go and perform any easy things. We'll kill ourselves. भगवान की सेवा पूजा में ये कह रहा था, मैं छूट गया, कुछ लोग भगवान की So, सेवा पूजा बहुत अच्छे से कर लेते I हैं। was saying that some ठाकुर जी ने थाली आरती भोग बहुत बहुत अच्छे से कर लेते हैं, venerate the Lord पति की सेवा perfectly, पूजा but करेंगे, बोले हमारा पति कुछ काम का नहीं है, ये नहीं हुआ, but they भगवान ने never कौन सा काम कर दिया, वो तो विचार ही है ना, venerate their ये तो husband. चलता है बोलता है, ये तो बेचारा चलता तो है, ये बेचारा कुछ दो शब्द बोलता तो है? The Lord परमात्मा तो बैठा है। never speaks So, or ये says भाव anything. at least करना चाहिए। But yeah, the husband आइए पराशर जी और एक can बात speaks बताना and चाहते हैं walk. आगे। So in Parashar Samhita, it is said further, पराशर जी कहते हैं, स्वामी नः प्रतिकुल्येन येषु जन्मसु गच्छति तारुण्यम प्राप्त सा नारी विधवा भवति ते ध्रुवम। स्वामी, यहाँ पर स्वामी माने पति। so Swami here refers to husband. प्रतिकुल्येन, अपने पति से Pratikulena means to oppose her husband. आज कुछ गरम खाने का मन होता है तो कहेगी नहीं आज ठंडा ही बनेगा, तुम्हारा शो है बोलो। पति कहेंगे आज आज ठंडा खाने का मन हुआ तो So if a husband says that I want to eat something cold today, then she will serve hot. अपने पति से So प्रतिकूल she रहती है। always is in opposition to her husband. येषु जन्मसु गच्छति, अब ये जन्म तो पति ने सहन कर लिया, So in this birth he will tolerate, but after this birth, wherever she takes a rebirth, तारुण्यम जवान होगी, then this woman becomes widow in her youth. देखो आप लिंक देखो, नीचे रामायण है, So ऊपर पराशर ऋषि see, है। अब दो below is नहीं Ramayan बोल सकते ना, and above is Parashar Muni, और ये रामायण से नीचे से है। and they both are talking the same things. फिर भी आपकी मर्जी। So it is very clear. कर रहे हैं, मेरा So खत्म still, हो गया, ये तो it is कंप्लीट कर दूं। आगे आगे अनसुईया जी कहती हैं, your सहज take अपावन her नारी। अब ये भी perspective. ये भी सहन नहीं होता, ये तो ऑनलाइन है इसलिए And further he has अब ये अनसुईया जी कहती है, क्या कहती है, ये मैं तो नहीं बोल रहा, अनसुईया जी कहते हैं what कि does सहज Anasuya ji says? अपावनी नारी, नारी कैसी होती है, स्त्री सहज अपावन, अपने आप में ही अपवित्र होती है। A woman ये in herself is impure. ये माता बोल रही है, और ये स्वीकार भी किया अहल्या माता। And जब राम जी it is expected by Ahilya. When Lord himself manifested in front of Ahilya ji, she said, पावन प्रभु जग पावन रावण रिपूजन सुखदाई मैं नारी पावन प्रभु जग पावन रावण रिपूजन सुखदाई। अब ये अहल्या माता के वचन है। these are the words of Ahilya ji. She says that I am a woman and I am impure. तो प्राय जो जो हमारे इतिहास में स्त्रियां हुई हैं, हम नहीं मानते वे अपावन है, लेकिन स्त्रियों ने अपने आप को अपावन, Although we don't consider them impure, but they themselves have considered themselves impure. Even Draupadi, oh, Kunti ji says that अमल आत्मनाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्ये महिस्त्रिया। बड़े बड़े लोग कृष्ण परम that मुनि
even the greatest exalted devotees cannot understand you, then how can I, a woman, understand you who is impure since my birth? How can I understand you? अनसुया माता कहती हैं, So Anasuya Mata says, नारी पति सेवत शुभ गति लहही. हे बेटा सीता, स्त्री Oh जो है ना Sita, if सहज a ही woman पवित्र होती है, लेकिन जब वह किसी पति की सेवा is करती है impure, तो पति considered उनकी impure, but अपवित्रता को ले when लेता है, उसे she पवित्र कर देता serves her husband, he takes her impurities है. and मासिक धर्म आदि से makes them प्रस्तुत pure. भी होता है कि किस प्रकार से नारियों में वह अपवित्रता प्रस्तुत होती है. हे देवी अनसुया And it is meant करती है. seen during the menstrual cycle, etc. So आपके दिमाग की खिड़की खुलेगी. अब तो आपको कान पकड़ना ही पड़ेगा. दूसरी लाइन में क्या कहते हैं? in the second line she says, चारी चारों वेद for all the Vedas sings the glories तुलसी का हरि ही प्रिय है. of Tulsi चारों वेद Maharani. जिसके गुण गाते हैं वो कौन है? तुलसी महारानी. हमने तो 7 दिन की कथा ही की थी ना तुलसी जी के ऊपर. अब आप बताइए तुलसी जी की कितनी महिमा है. So how much glorious Tulsi ji is. में भोजन ग्रहण नहीं करते. Without her, तुलसी के the बिना Lord अन्न भी ग्रहण नहीं करते. doesn't तुलसी जी even जल धारण करते offers, है ना. तुलसी के गुण हमने accepts सुने हैं. bhoga, और यहाँ or पर कहते even हैं us. तुलसी We wear हरि Tulsi प्रिय. beads ये तुलसी जो है ना हरि की प्रिय बन गई. and तो she अब became यहाँ पर जो हमारी डिवोटी माता the जी है ना, इनका एक ही प्रश्न होगा, ये 3rd क्लास के पति की सेवा हम क्यों करें? भाई हमको तो कृष्ण का प्रिय बनना है. so तो राम का the प्रिय women बनना can है. say that ये we पति want to प्रिय be बन beloved of जाएगा. Ram पति or प्रिय तो ठीक है, Krishna. अब तो हो गया. लेकिन हमें कृष्ण का प्रिय बनना है, राम का प्रिय बनना है. यदि ऐसा भी है So if we want to become एक स्त्री को पति की सेवा करनी चाहिए. the beloved of the Lord, then also we should serve our husband, चारों which वेदों is में proved जिसका गुण here. गाया गया So it is said here that वो तुलसी all the Vedas have हरि glorified को Tulsi प्रिय कैसे Maharani. बनी? मुझे And बताइए. how did she तुलसी became और favorite कैसे of प्रिय हो गई? the Lord? कैसे प्रिय हो गई? उन्होंने क्या किया था? What did she do? याद आ रहा है कुछ? तुलसी Do का you remember? जन्म वृंदा देवी So, के रूप में था. she was born as और Vrinda वृंदा Devi देवी का विवाह किससे हुआ था? and she was married to शंखचूड़ Shankhachur or असुर Jalandhar, के साथ. who was a और demon. वृंदा देवी असुर था उसका पति. And Vrinda Devi was married to a demon, पतिव्रता yet धर्म का पालन किया. she followed the principles of womanhood. नहीं है ना कि वृंदा देवी ने कोई It is विष्णु not को described पति that माना था का किसी को. she have वृंदा देवी ने accepted Vishnu as her husband. No, she has accepted Jalandhar as her husband and followed the principles of womanhood toward him. जलंधर के पति पतिव्रता धर्म देखकर भगवान And विष्णु seeing को प्रिय हो her गए. ये बात है. principled womanhood, वृंदा ने she जलंधर became के beloved of पतिव्रता Lord धर्म Sri निभाया Hari. था. लेकिन वो पतिव्रता धर्म को देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए. और इतने प्रसन्न हुए And he फिर became दूसरे so जन्म में satisfied विवाह that हुआ. और in the तुलसी के second अलावा भगवान कुछ नहीं करते. birth, तो ये सिद्धांत माता अनसुया कहती he है married कि her हरि को भी यदि and he प्रिय बनना never है, accepts anything without यदि her. प्रिय बनना है, So if we want to become beloved of the Lord, then also पतिव्रता we should धर्म का पालन follow the principles of womanhood. एक 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 पतिव्रता धर्म के विषय में एक बहुत सुंदर युक्ति यहाँ पर निवेदन की है. अंत में एक बार क्या हुआ? Once upon a time, what happened? तम प्रसमीक्ष पावके. एक बार एक पतिव्रता नारी अपने Well, पति की a सेवा कर रही थी. principled पति woman के चरण धो was रही थी, सर धो serving her husband. She was और massaging उसका एक छोटा his सा लड़का feet था, or head, छोटा सा and बच्चा she था. had a small son वो खेलते खेलते who अग्नि was में चला playing, गया, आग and में चला गया. he तो went श्लोक towards पढ़िए आप ऊपर.
fire. So if you see in the verse, प्रसमिक्ष पावके न बोधयामास पतिम पतिव्रता सुतम बेटा पतंतम गिर गया किसमें so the son fell down और in उसकी माँ fire, को पता नहीं रहा क्यों क्योंकि and दूसरे में लिखा है न the बोधयामास mother was unaware माता को पता नहीं चला क्यों क्योंकि पतिम पतिव्रता वो अपनी पति की सेवा कर because रही she थी was serving और her पतिव्रता husband नारी थी and अब she वो was a आग में principled गिर woman. और Her पति son की has सेवा कर fallen रही into थी fire while she is कमाल serving her देखिए husband. पतिव्रता धर्म का And प्रभाव देखिए आप see the potency किस रीति of से principled पतिव्रत women. शाप भये न अब अग्नि देवता ने सोचा The लड़का तो मेरे अंदर गिरा है लेकिन fire जिसका god लड़का thought है that ना इसकी माँ पतिव्रता he has नारी है fallen तो onto इसकी me, माँ यदि but मुझे his श्राप दे देगी तो मैं mother हता is कत्ता हो जाऊंगा principled तो कहते women, हैं and if she पतिव्रता curses, शाप then I will भये not पीड़ित exist हो गई anymore. उस पतिव्रता नारी के शाप के भय से पीड़ित So हो गई by the fear हुताश of वो हुत getting बहुत गई cursed, चंदन the पंख शीतले चंदन की तरह शीतल fire हो गई itself चंदन की turned तरह शांत हो into गई चंदन की तरह ठंडी हो गई sandalwood वो आग उस paste, बालक के लिए फूल बन गया और and बालक it उसमें the खेलने fire लगा became a ये flower, होता है पतिव्रता and he started playing. लेकिन जो न This is जाने तब the पता चले ना जब जीवन में principle पतिव्रता धर्म of का womanhood. अनुभव ही नहीं है तब If इसका अनुभव कैसे we follow, then only we इस can प्रकार से realize माता or कौशल्या feel ने the potency. सीता को यह So सुंदर this is उपदेश what दिया Anasuya और ji अंत में कहती हैं कि सीते gives a सीते beautiful यद्यपि तुम्हें ये आवश्यकता lecture नहीं on है womanhood to लेकिन Sita मैं ji. माध्यम She बना says that it is not necessary for you, शिक्षा मिले but इसलिए मैंने आपको ये सुनाई so that एक it दिन can be shared with भगवान others. रामचंद्र That is why I'm telling you. और दूसरे ही दिन भगवान रामचंद्र And the वहां से second विदा day, किए Lord Ramchandra leaves. अत्रि और अनसुया जी की आंखों में आंसू आए Atri ji and और Anasuya भगवान जी ने ji are filled with emotions भगवान and are रामचंद्र के crying, गुणों को गाते हुए and they भगवान श्री are राम singing the glories of Lord Sri Ram. तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन नयन मुख पंकज दिए मन ज्ञान गुण गोतीत प्रभु में दीख जप तप का किए जप जोग धर्म समूह ते नर भगति अनुपम पावहीं रघुबीर चरित पुनीत निशिदिन राम तुलसी गावहीं। राम जी जब घर से निकलने लगे So when Ramji is about to leave, Atruji's eyes are filled with tears, and he crossed his hands and said that I have performed no austerity, and the Lord who is beyond our mind, heart, intelligence, and qualities, who is transcendental, such Lord has came to our home and stayed with us for a night. I haven't performed any austerity. It's just your mercy that you came here. In this world, just by taking the name of Lord Ram, or by singing his pastimes or performing devotional service to him, the way he reached Atri Muni's ashram, he will come to our heart with such thought. Goswami Tulsidas ji concludes this.
So this is the last yatra of Ram, Lakshman and Sita ji together, and then she will be abducted by Ravan, and we will listen to them in next day. Although it is not said in detail, even I haven't said it in detail, but as you are very patient and you're inquisitive and you all are following the righteousness of a minute, so if I have said anything wrong, then please excuse me. So I have no qualification to talk. So I have just spoken what I have read and what Mata Anasuya has said. So whatever you like, so please try to. Please try to perform it or practically apply in our life. So let's pray and say our gratitude towards all the participants, especially the host family, Manima Lal Prajapati ji and his family, Baldev Bhai Dharmishta Mata, their son Prakash and Riyan. I thank you all for this beautiful event. So let's conclude the session with Jai Jaikar. श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की।